Hello everyone, welcome to my channel and welcome to the Little Italy of New York. This is the Mulberry Street bar restaurant. It's a very famous place and the tourist comes in the tourist attraction of New York. The place is free to visit in the New York City. You can go there. That was in my to-do list and finally I got a chance to visit that place. We went there by a train. I went there with my friends. We had a very good time there. We ate a lot of pizza, the Italian pizza, and the whole market which you see there. That's remind me kind of a Tulsi Bagh of Pune. So welcome to Little Italy. ये जो प्लेस है ये चाइना टाउन के जस्ट अपोजिट साइड में ही है. आप चाहो तो एक दिन में ही दोनों कवर कर सकते हो, चाइना टाउन एंड लिटिल इटली. बट मेरे लिए बहुत टू मच था तो आई वेंट देयर सेपरेटली फॉर द लिटिल इटली बिकॉज मुझे वो अच्छे से इन्जॉय करना था. एंड ये यहाँ पे आप स्ट्रीट देख रहे हैं, स्ट्रीट ही इटसेल्फ बहुत ही ब्यूटीफुल है. हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं यहाँ पर. पूरा इटली का फ्लेवर देता है. लोग बोलते हैं जो लोग लिटिल इटली होके आए हैं कि यहाँ पे जो सेम फ्लेवर मिलता है इटली का. आई नेवर वेंट देयर इन इटली सो आई कैन नॉट कंपेयर. बट I believe that you should go there one time at least. One time you should go there. But the taste and everything I found similar, and the pizza taste is similar, but the cost is little bit high. Maybe it's because of New York, so everything is costly there because Texas is high. So compared to Jersey City, New York is वैसे भी costly है. तो pizza and everything was costly. And these are the things you are watching there. This is the Tulsi market of Pune. You will see there. एंड जो लोग पुणे से हैं उनको फर्गूसन रोड की याद दिलाएगा ये. अमेरिका में FC रोड यू कैन सी देयर. मुझे तो सेम ही फीलिंग आई वहाँ जाने के बाद. मैंने अपने फ्रेंड से कहा, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान भी लिया वहाँ से. बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस. यू कैन गो एंड हैव अ कॉकटेल ऑल्सो देयर आर एवरीथिंग इज़ देयर. एंड वी वेंट देयर, वी रोम अराउंड एवरीवेयर वट एवर.